again, thank you, Mala, for organizing this thing. You are always an flag bearer everywhere, and because of you, I think I don't know about other, but I am here after seeing your post that the way you have started your journey. So, like last from 1 year. Like when I started my journey, when I saw that there are lots of people, those who struggle actually to find the right kind of opportunities. So the first thing is the LinkedIn. If people are using LinkedIn only for the job scrolling portal, it's not about job scrolling at all. So for LinkedIn, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड जो भी यूज़ नहीं करते हैं या जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि लिंक्डइन का अपना एल्गोरिदम है। जो भी आप सर्च करते हैं, अगर आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपको जॉब पोस्ट नहीं दिखाई देंगे, एंड यू नीड टू बी रिलाई ऑन अदर people. So first thing is the LinkedIn. Second, like I used to share or I used to fetch out job opportunities either from UN, government, or the fellowship, internships, or whatever job kind of job opportunity which are available here. So these days, even particularly after 2021, what I have seen that government is very active in this segment. So अगर किसी को जॉब ढूंढना है और वो भी ऑथेंटिक जॉब ढूंढना है, तो सबसे अच्छा आई विल सजेस्ट कि नेशनल करियर सर्विस का जो पोर्टल है, every job seeker need to be registered there to get authentic job source from the government of India. Either it's for from the government of India, or from social sector or any other sector, wherever or whatever kind of job they are looking for. So this is one of the portal which we can like I will suggest that everybody need to see if they want to continue or if they are looking job opportunities from the government of India. Second, the district level of or the district level of communities which are started by the district collector under the leadership of district collector. So these district level of websites are providing very good authentic jobs for the job seeker. So if you are looking something at your own district, so before going anywhere like on naukri.com or any other job profile, I will suggest that start scrolling your own district official website, and under the recruitment section you will get all the details. And I think these are the opportunities which are rarely explored by the job seekers. And so whenever I used to share these kind of job opportunities, people like the kind of responses when I got on these kind of posts, people are overwhelmed to see that these kind of posts are available with the government of India while working in the social segment only. So this will be the I think the second thing which I will suggest for the job seekers, that if you need an authentic job source, please start registering yourself with the National Career Portal, or start exploring your district level website which are developed by the different district authorities. So you can explore opportunities there also. And like there are multiple portals which are right now available, or individual like you and me, and there is a long list of individuals. Those maybe they are not full time in the HR services, but they used to share relevant information from the relevant or authentic sources. So people can follow these individuals also. Again, like it's about the LinkedIn only. So we need to use LinkedIn effectively so that LinkedIn will help us in our favor. Thank you, Maninder. And something that Maninder also missed out is building jobs from nest.com. They're signing, I mean, you can sign up to be an early user and help Maninder and the ecosystem build jobs of Nest. Thank you, Maninder. Why don't you take turn? Yash, let's talk about public policy, jobs, and where should we find, how should we find? Thank you so much, MS. Firstly, I just love the fact that there's so many people on this call whose work that I have followed and greatly benefited from. Maninda, I need you to know that आपके काम से सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म के बाहर भी काफी लोगों को फायदा होता है. You know that the work that Maninda does, a lot of people benefit from outside his immediate reach on LinkedIn. Right? So thank you for doing whatever you do. Quickly coming to your question, MS. Just a slightly different perspective. In fact, just adding on to what Maninder has already said, right? All the points that he's mentioned, absolutely spot on, right? A couple of things that I would add on is, at least, from my experience, given how
relatively unstructured the policy space is, although that has obviously been improving over the years, right? That can also work in your favor, right? In the sense that, all the internship that I did during college, right? Most of them were not internships that existed, you know. It was just me reaching out to people, right? Sometimes cold emails, DMs, right? And not randomly, of course, with some proof of work, right? Document, deck, whatever, right? The chance of that working out are lesser now because, again, the space has gotten formalized, which is a good thing, but still those opportunities exist, right? So, and even if you're a student, maybe through your professors, right, or some other network or your peers, right, or maybe you're managing your last internship, whatever, there's no harm in asking, right? So, point being that, if you can, do try and figure out where is it that you can add value and reach out to people. You never know who might give you a chance to, do that, right? The second bit is, and I'm not just saying this because, we at PPI run some of these communities, but there are others as well, right? Join community groups, right? And that just does not just have to be on WhatsApp, for example, right? Job Shop Nest itself, I think, runs a newsletter, right, on LinkedIn, right, that comes out every week or whatever, right? Again, that's something you can be a part of, right? Other people who run groups in all sorts of platforms, right? Join those community groups, right? Because there the thing is, it is wrong for us to assume that any one person can give you all the opportunities out there, right? In community group, anyone discovers anything they can share, right? And finally, and in fact, again, basically just building on what Maninder was saying, that careers page, right? I can't tell you the number of times that I've seen really good job openings and roles, right, at decent organizations. It's just that they have maybe not advertised it enough, right? LinkedIn has one big bug, one big issue with LinkedIn is that if you use the embedded jobs application feature, right, you remember the small box that comes in a post, there's something like, I'm hiring and details below, right? If you don't pay LinkedIn for it, then I think it expires after 24 hours. Right? If you pay LinkedIn, then that easy apply button stays for a longer time, something like that. Right? They change it a little here and there, but you get the point. Right? So a lot of people feel that that listing is not active, but it actually is. It absolutely is. Right? So again, go to careers page of different organizations. Right? In fact, if you need a list of like some almost 600 organizations, and we updated it just last week, and go to publicpolicyindia.com, you'll find it there. Other places as well. That's not the point, right? But the point being that go to careers pages of organizations, figure out a shortlist for yourself, and that will also surprise you how many openings that there are. Yeah. Thank you, Yash. This is really helpful. I'm also putting the links, etc. So Yash, feel free if I miss out on the link, etc. Fardeen, Sanjana, you want to move next quickly, and then we can move to Ayush then. Yeah. Fardeen can go ahead. Okay, thank you, Sanjana. Thank you. So first of all, thank you, MS, for organizing this. It's a pleasure to be here, sharing this space with such inspiring leaders who are passionate about social impact. So when we think of social sector, we often picture grassroots NGOs and community work. But today, the impact space is evolving in ways we never imagined. It is evolving rapidly, and many exciting opportunities go unnoticed. Like there's a growing space in public policy, programs like good governance fellowships by org like IIC and TRIF, and young professional roles in various ministries offer hands-on experience in policy making and governance. Also, many organizations, including startups and non-for-profits, are working on bridging learning gaps through digital platforms, and they need passionate individuals who understand both education and technology. Apart from this, organizations are also actively looking for young professionals with the skills in impact assessment, data visualization, and AI-driven insights. If you have a knack for analytics, this is a field to explore, I think. So I would say the social sector is no longer limited to traditional non-profit roles. It's expanding into technology, policy, entrepreneurship, and data-driven impact. So keep an open mind, explore different pathways, and find the best fit for your passion and skills. To find opportunities apart from LinkedIn and conventional job boards like DevNet and NGO Box, I always recommend exploring dedicated platforms such as Ground Zero, Network Capital on Facebook, Public Policy India, and communities like recently launched Job Shop Nest, Oop Avenue, and other such active and vibrant platforms. Also, I would recommend to connect with people who are actively circulating opportunities through LinkedIn and WhatsApp. So, yeah. Great. I think those who are on the call definitely should follow the folks who are sharing insights, because
while they are here, they keep on talking, sharing opportunities every day. Sanjana, why don't you help us? How should we find? I'm sure you recently changed or moved to ASDM, so you Yeah, have better experiences on how to find jobs, where to find. So yeah. yeah. मतलब I can share my own experience only that how we find jobs. So it also मतलब बहुत ज्यादा I can speak in Hindi, right? We can do Hindi English both. तो बहुत ज्यादा ये भी डिपेंड करता है कि किसी स्टेज पे आप हो. समटाइम्स पीपल एंटर टू द सोशल सेक्टर नोइंग नथिंग अबाउट सोशल सेक्टर, तो उनको बहुत डिफिकल्टी होता है टू इवन फाइंड अ सिंपलेस्ट जॉब, क्योंकि जो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, जिस तरीके का लाइक क्वेश्चन आंसर, जिस तरीके का विजन यहाँ के लोग मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फोर्स ही करते हैं, वो नए लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता. वाइल इफ यू आर इफ यू आर 1 year older to the program or any of the organization, or you have done some fellowship, you get some kind of like ground knowledge about how to like pitch yourself to any other organization, which makes you a little bit like understand that the nuances of the organization. Also, difficulty came when you become little bit senior, like you cross 10 years. Now you finding a particular job of your own interest, that's another challenge which a lot of people face, because उनको या तो जितना सैलरी एक्सपेक्टेड है उतना सैलरी नहीं मिल पाता है, या फिर जो जॉब रोल एक्सपेक्टेड है वो जॉब रोल नहीं मिल पाता है. एंड आई थिंक इट इज सेम फॉर द कॉर्पोरेट साइड of the jobs also, because senior to mid like people who are working early stage professionals and mid level career professionals can easily transition to their like jobs, but it is very difficult to set your own boundaries, set your own limitations when you are becoming, when you are understanding your own core, or you want to do something which you figure out कि आपको तो यही करना है. And at that stage, a lot of people start figuring out social entrepreneurship track. In corporate, they find a entrepreneurship track, and we find social entrepreneurship track. That if I want to do something of my own and I want to, and I'm very passionate about it, why not try this out and why not do this? So वो भी एक element career के prospect में खुल जाता है. Then there are different kind of domains कि आप funding कर लेते हैं, incubators के पास जाते हैं, या अलग अलग खुद सीड फंडिंग करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर like backgrounds, privileges and everything that also need to be accounted. So वो सब चीजें फिर those options also open. बट जो स्टार्टिंग में मैं बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल नए लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उनको सोशल सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है. इफ दे हैव क्लियर दैट आंसर दैट व्हाई दे वांट टू जॉइन द सोशल सेक्टर, इवन एज एन एक्सपेरिमेंट फेज आल्सो, आई फील fellowships becomes a much safer space for someone to start with. Once they do the fellowships, they get a time to understand themselves also, and they also understand that कि हाँ उनको इसको कंटिन्यू करने का मन है कि नहीं. So it's easy then it is easier as compared to doing a full time job. तो एक तो ये ऑप्शन है. तो दूसरा ऑप्शन मेरे को लगता है कि there are colleges एंड पीपल डू गो टू कॉलेजेस. अगर मेरे को बिजनेस सीखना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं बिजनेस स्टडीज करने जाऊंगी. वैसे ही अगर मेरे को सोशल सेक्टर में काम करना है, मेरे को समझ में आ गया है, मैंने कॉलेज में एनएसएस में पार्टिसिपेट किया, मैंने कॉलेज में बहुत ज्यादा वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज की, मुझे अच्छा लगा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर करियर है कि नहीं. तो आज की तारीख में, पहले नहीं था इतना, बट आज की तारीख में इतने सारे कॉलेजेस हैं जो आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग. भले ही वो आईएसडीएम है या फिर टिस है या फिर एपीयू है. मतलब अब ऑप्शंस ज्यादा हैं कि अगर आपको अपना ग्राउंड लेवल भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो यू कैन चूज वन ऑफ द कोर्स एंड गो फॉर इट फॉर योर अर्ली करियर डेवलपमेंट, सो दैट यू हैव लाइक अ डेडिकेटेड पाथ फॉर वर्किंग लाइक अराउंड 5-6 years. एक कॉलेज में पढ़ने के बाद एटलीस्ट 5-6 years का बैंडविड्थ होता है दैट यू कीप कंटिन्यूइंग वर्किंग. आफ्टर 5-6 year यू माइट फील कि अब मुझे कुछ और नया करना है, अब मुझे कुछ नया सीखना है. वो 5-6 साल के बाद आता है, मेरे को लगता है सब में ही आता होगा. तो that is something which I wanted to share and highlight. Maybe it's yeah. Great. Thank you, Sanjana. And while you were speaking about fellowship, हमारे साथ यश है. यश, सॉरी, आयुष है. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ. यश और आयुष में दोनों अच्छे दोस्त हैं. तो आयुष ने हरियाणा सीएम का जो फेलोशिप है वो किया है.
Then he worked with Central Square Foundation, and then abhi independent consultant है. Different trajectory in the sector itself. Ayush, अगर आप share करना चाहें, how should we get to what you are doing? So Yeah, good evening, everyone. Thank you so much for having me here, MS. And thank you, everyone else who shared their insights. I think given that people have before me have talked a little bit about where of opportunities, and Sanjana has also talked a little of why of opportunities. I think I'll start with the what. Um, मेरे लिए द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ ढूंढे, क्या ढूंढे, कैसे ढूंढे, से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ढूंढे. And I think that's something that no one else can answer for you. We can give you the guiding tools, and I think that's what I'm going to talk about. कि क्या ढूंढो, because I think um, every time I speak with particularly people who are in college or people who are just entering the sector, I do find a lot of exposure to कैसे ढूंढे opportunities. Again, LinkedIn has become all our friends over the last 10 years, and even the sector is evolving in a manner that there are a lot of opportunities around. But कई बार लोग उनको क्या ढूंढना चाहिए वो नहीं जान पाते हैं. आई थिंक in my opinion, the three things that a person needs to do at whichever stage, especially early career, but at whichever stage of their career they are in, is the who they are. And when I say who they are, what skills you possess, what degree you possess, what can you value add to an organization that you're considering, what do you want to do. I think Sanjana talked a little bit about the why of it, कि आपको क्यों करना है ये सब. जैसे मुझे एजुकेशन सेक्टर में काम करना था, तो आई डिड वर्क इन एजुकेशन सेक्टर, बट आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ बिफोर आई इवन स्टार्टेड इन एजुकेशन सेक्टर कि व्हाई डू आई वांट टू डू इट. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अंडरस्टूड द व्हाट ऑफ द स्पेस, कि एजुकेशन स्पेस में है क्या और किस किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं. आई थिंक दोज आर द आंसर्स that you may have for yourself, but you don't focus enough sometimes on answering those questions. And if you don't do that, you'll be almost like a kati patang ki idhar ja rahe ho ya udhar ja rahe ho based on what you are interested in. And the what part also involves what of the sector. I think the exposure part of it. Over the years, I've also seen a lot of people being very attracted to the brand name that is offering the internship or offering the young professional program or anything else. But there's so many times that those are not the experiences or roles that are very like beneficial or very rewarding in the end. And the problem with that is that because again there's an information symmetry when it comes to this sector compared to some other more traditional sectors. आप ज्वाइन कर लेते हो थिंकिंग कि दिस मिनिस्ट्री एक्स रोल इज ग्रेट एंड इट वुड लुक ग्रेट ऑन माय सीवी एंड इट वुड गिव मी दिस एंड यू assume those things without having enough information. So what should a young professional do when they're figuring all of these questions out? The who, what, why. The first thing is, of course, you have to do some internal thinking along with some external exposure. Now, how do you go about that exposure is something that I would like to talk about. I'm strictly keeping it to people who are just entering this space, because then otherwise it would make the conversation very broad if I start talking about people who are coming from corporate and everything. So let's assume, just for the conversation's sake, the people who are entering this space after their bachelor's, master's, or maybe 1 or 2 years of experience at a Ernst & Young or any other corporate space. You need to do a little bit of what I would say introspection or Atma Manthan as to why you want to enter the space, what attracts you on a broad level, and then go on to understand what exists in this space. And the ways you can do it are multifold, again, given your condition and what you are able to offer. One of the obvious things is attend these kind of webinars and these spaces. I think most of my initial learning when I was still entering this space, which enabled my choices of career options, and there was thankfully really good career options for me in hindsight, was coming from the fact that I attended all of these conversations, not just about careers in this space, but also so many report launches, so many panel discussions, so many other discussions that happen on public policy forums and everything. Every year one of my favorites was every year this 5 think tanks used to release this report on budget. And every year I would meet 10 or 15 people as a young student. I would meet 10, 15 people already working in this space across different think tanks and NGOs.
The second way, of course, that everyone knows is internships. I think, again, you also need to analyze who you are. And when I say who you are and what you can offer, a lot of times people reach out to rather large organizations for internships, and then they are disheartened because internships easily नहीं मिल पाते हैं large organizations में, established organizations में. I would get hundreds of LinkedIn messages doing that. What you can do perhaps is use these platforms like LinkedIn to figure out what are the rather more up and coming organizations that are in this space. In fact, when I was at Central Square Foundation, one of the lead people in the leadership team, I think Central Square Foundation today has become one of the largest organizations in the space. But one of the people who was working with me there was someone who joined them as an intern back in 2011 and now was in the leadership team. That person joined them when they were working out of a flat in some South Delhi colony. And now now it's like a 250 people organization working across 20 different states. The point is that person back then had the understanding to understand what kind of work this organization is doing, what can I get out of it, and ended up staying in the same organization for 12 years until he had to move because of his family to Bangalore. So I think that's another thing that I would suggest to people, to figure out these internships in a manner where it's possible for you to get an internship. A lot of Delhi University students will reach out for internships at places that they want to work at, but may not learn a lot because it's such a large established organizations that sometimes you don't get enough out of it. And I think third is be ready to make mistakes early, because I think a lot of people want to join a particular sector like healthcare or education or whatever else. My suggestion is try to keep it as broad as possible and try to experiment in your initial years, because after like 3 or 4 years, you would be choosing a sector or space for yourself eventually, but you can choose to experiment little in the first 2-3 years of your career. I did that with internships. I chose a sector for my internship where I wanted to experiment अगर मुझे इस sector में काम करना है ना. And it gave me clarity for life that this is one sector I don't want to work in. And I'm so thankful that I chose to do an internship there. And even while starting out my career, the two things that I did was fellowships. I started with this fellowship called LAMP because I was interested in politics and policy. And I got an understanding of how not just the parliament functions, but because I had these wonderful 50 peers, I got a lot of peer learning and a lot of learning. I think I usually say fellowships are one of the best ways to start your career in the sector. I would talk a little bit more about it, but I don't want to take more time from the other panelists. So I'll come back to it. Thank you. Thank you, Ayush. You spoke about fellowship, LinkedIn, and maybe internships. बड़ा सवाल यही होता है, and then wait, ground zero, keep on hearing this because we only cater to certain roles every month, and these are also mid and senior roles. But the problem stays the same is मैं कैसे shortlist हूँ? What are the chances that I have, or what should I do? कैसे start करें? Ayush, you want to take up, or maybe Maninder, we can go with the flow. How do you suggest? Ayush, you want to respond, or we can move to Ayush? Sorry, Maninder. No, I think we can move to Maninder, unless there's a particular question you want me to respond to. Sure. Yeah. Maninder, you want to take, because Yes. you also Sure. keep on reviewing profiles every day, keep on speaking with people through TopMate one-on-one. You have been also in coach like Yash and Ayush for people. तो क्या लगता है कैसे shortlist होने के chances increase हो? क्या करें, क्या नहीं करें? माला, जैसे मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं, स्पेसिफिकली मैं टॉपमेट पे कुछ 1000+ लोगों के साथ वन-ऑन-वन सेशन लिए हैं, और इसमें अगर मैं बात करूं, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ फ्रेशर्स इस चीज़ से जूझ रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट फ्रेशर्स एट ऑल. I have interacted with people, those who have more than 30 years of experience, and they are struggling with the same thing. So it is happening across the sector. Everyone is confused how to do it, or how to get shortlisted. So basic सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी अभी तक, हमने जो है कुछ 10,000 CVs को we have just scrolled down to see that what is happening in the profile.
कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ पे जॉब सीकर्स जो हैं वो पिछड़ रहे हैं और क्या वजह है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सीवी जो हमने पाया है, सीवीज नहीं, हम किताब लिखते हैं। और किताब लिखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, हम लिखते हैं उसमें कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ये ऑर्गेनाइजेशन 1986 से 1976 से काम कर रही है और इस पे काम कर रही है, उस पे काम कर रही है। बट हम क्या कर रहे हैं उसमें, नोबडी इज लाइक फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोफाइल को, लोग आई थिंक बहुत लाइटली लेते हैं कि प्रोफाइल की जरूरत नहीं है। हमें जो है बस लिख दें, सारी डिटेल लिख दें उसमें कि जो है ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया वो किया वो, लेकिन लोगों का आई थिंक सबसे पहले जॉब सीकर्स को दे नीड टू हाईलाइट देयर अचीवमेंट, देयर इम्पैक्ट, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर। तो वो चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं मिसिंग है, और वो एक बड़ा वजह मैं देख पाया हूँ कि प्रोफाइल में मिसिंग है। इसकी वजह से पीपल जो है वो जो है लोगों को जो है जॉब ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी चीज़ जो है खासकर यंगस्टर्स को जब मैं देखता हूँ कि द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दे हैव इन टर्म ऑफ देयर स्किल्स, वो बहुत, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है कि जो है हर किसी को जो है 1 साल के बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, हर किसी को लीड करना है। मुझे जो है हर दिन ऐसे मैसेज आते हैं, आई यूज टू लाइक, मुझे कई बार उस पर फिर हंसी भी आती है कि हमें सिर्फ जो है अब 5 साल हो गए, मुझे अब CSR लीडर बनना है, उससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो इट्स नॉट बैड, मतलब जो है एक बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल मैं देखता हूँ कि SBI फाउंडेशन जो लीड करते हैं, ही इज आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट VP इन दिस सेगमेंट। आई थिंक वो कुछ 25 साल के वो जब लास्ट बार मैंने उनका प्रोफाइल एनालिसिस किया था तब मैं देख रहा था। तो ये बुरी बात भी नहीं है कि हम जो है सीनियर लीडरशिप काइंड ऑफ रोल्स पे नहीं जा सकते हैं, बट वो स्किल्स भी हमें चाहिए। आई थिंक लोग जो है उन स्किल्स पे कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं कि हमारे प्रोफाइल में जो है टीम मैनेजमेंट की स्किल्स ही नहीं है, बट वी आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर काइंड ऑफ रोल। वो स्किल जब तक है ही नहीं हमारे प्रोफाइल में, और फिर देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है HR विल रीच आउट टू देम, और HR जो है उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना जो है कहीं ना कहीं लोग छोड़ रहे हैं बहुत। जो है ग्रुप में भी मैं लगातार देखता हूँ कि मुझे यहाँ जॉब ढूंढनी है, लेकिन जो है जॉब आपको ढूंढनी है, हमें पता है कि आप यहाँ पे हैं, इस कम्युनिटी में हैं, यहाँ पे सभी लोगों को जॉब ढूंढनी है, इसमें आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब हम जैसे मैं अपने करियर की बात करूँ कि मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया इंटर्नशिप्स के साथ। जो फ्रेशर्स खासकर मैं कहूँगा कि इवन एक्सपीरियंस लोग भी जो है वो मिस करते हैं कि हम अपनी इंटर्नशिप्स को बहुत लाइटली लेते हैं। आई थिंक हमारे करियर की स्टार्टिंग जो है, जैसे अभी भी मैं ग्रुप में पढ़ रहा हूँ कि मैं फाइनल ईयर सेमेस्टर जो है स्टूडेंट हूँ, या फिर जो है मुझे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, या फिर मुझे जॉब ही नहीं दिखाई देती है, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। आई थिंक इंटर्नशिप बहुत क्रूशियल पार्ट है जब हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक उसी टाइम हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जैसे आयुष भी बता रहे थे कि हमें क्यों करना है, क्या करना है, किस लिए करना है। आई थिंक वो क्यों हमें वहाँ अगर हम जान ले तो जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप्स की, और उसी इंटर्नशिप के बाद जो है मुझे मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्ड मी एन जॉब विदाउट डूइंग एनीथिंग। क्योंकि इंटर्नशिप्स के दौरान वो बॉन्डिंग मेरी थी, वो काम जो मैंने किया था, दे इम्प्रेस्ड विद दैट। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन जो फ्रेशर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर डाल सकते हैं, और वो अपने कैंडिडेचर को शॉर्ट लिस्ट करने में आई थिंक उन्हें आसानी हो सकती है। तो इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरिंग, आई थिंक these days PM internship portal is also there. Those who are struggling to find an internship, they can go for that. I think वहाँ पे every day I used to see that this organization is hiring XYZ number of intern through internship portal. तो वहाँ पे register करके I think we can go for these kind of फाउंडेशन थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर करियर। अगर हमें फ्यूचर अपना अच्छा अगर हमें बिल्ड करना है, तो आई थिंक वो क्यों हमें अगर इंटर्नशिप से पता लग जाएगी, देन सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। और एक चीज़ जो है लोग जो है, जैसे मैं भी वेबिनार सीरीज जो है ऑर्गेनाइज करता हूँ एवरी मंथ। वी यूज टू इनवाइट डिफरेंट CSR लीडर और people those who are very good in industry, so that they can share their experience, particularly the young people, those who have entered in the CSR, how they reached there, what kind of strategy they used. So मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है लोग ऐसे मीट्स में जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन जाना,
पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन आई थिंक ये भी बहुत क्रूशियल चीज़ है अगर आपको जो है कुछ अच्छा ढूंढना है, नेटवर्किंग अच्छी बनानी है, क्योंकि ये नेटवर्किंग इन फ्यूचर जाके आपके बहुत काम आती है। जो लोग जैसे ब्लेम करते हैं इंडस्ट्री को, खासकर सोशल सेक्टर में, कि यहाँ जान पहचान के अलावा कुछ नहीं होता है। होगा तो सिर्फ जान पहचान से ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम फ्रॉम द स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द करियर, और अगर हम एज ए प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करें, इस तरह की मीट अटेंड करना स्टार्ट करें, तो हमारा नेटवर्क अपने आप बढ़ता चले जाएगा, एंड देन इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू फाइंड एन जॉब। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, Maninder. Very, very helpful. Yash, you want to add based on basis your experience, how do people have better chances to get shortlisted? Thanks so much, MS. And this is something like it sounds like a pet peeve for me. I keep talking about in leaders and different spaces whenever I get the chance, which is, if you think about it, in any sort of developing country, right? It's a very low trust society, right? In general, it's not just an India thing. It's a very low trust society, right? So by that, what I mean is that, even if I put in my resume that I know XYZ, right? That basic amount of trust that this is true. And this resume is a very silly example, but you get the point. Across, social sort of setups, right? That instant trust that, oh, this has to be true, and I don't need to triple check this or verify this, is not there, right? Who's at fault? I'm not going into that, but that's how things are, right? So the point being, and I call it, it's called the Tata principles, right? Which is basically, if you think about it, like as an example, the Tata Group can sell us anything and everything, from salt to steel to software, right? Why? Because they've built trust over years and centuries, right? So, in a Lotus society, there are only two ways in which you build trust. So either you build that over years, or you borrow trust from institutions, right? So, for example, if I am coming to you for a job, you would be like, I don't know if Yash can do this job or not, if he has these skills or not, but he's worked in parliament, whatever, he might have these skills, right? Simply put, right? So, at the crux of the matter here being that it essentially becomes a game purely of credentials, right? Just what Maninder was mentioning as well, right? And how do you build credentials? There's just two ways. There's no third way, right? Either there's through the education route or the work experience route, right? So in the education route, it can be full-time degrees, it can be diploma, it can be short-term certificate courses, whatever, right? And in the work route, work experience route, it can be internship, volunteering, consulting, full-time job, etc. Right? So just two ways of building those credentials. Ideally, it should be a mix of both. You should have a mix of work credentials as well as education, right? If you have just work credential, won't take you too far. Only education, again, won't take you very far, right? And within that, Maninder is beautifully covered in terms of how do you get those opportunities, right? In terms of, I mean, of course, there are different platforms and all of that, but my only suggestion would be that, your ruthless focus should be on one thing and one thing alone. That how do I build those credentials for myself, right? Either through the work route or through the education route, usually a mix of both. Please remember, all of us have very different contexts, right? For example, not everyone can go abroad for a 2-year degree, right? That's completely all right, right? There are other ways of getting those education credentials while being in India or virtually, or faster, cheaper, quicker, whatever, right? There'll always be trade-offs, right? So, once you have that framework, that just two routes to getting to what I want to. In route one, I can do XYZ. In route two, I can do XYZ. That's it, right? And then the sole focus should be, how do I get to whatever credentials that I can get my hands on right now. I hope that just provides like a framework sort of a thing, without getting specific. Thank you. Definitely, Yash. What you and Maninder mentioned definitely makes sense. Sanjana, you have some perspective, would be good to hear from you. Yeah, little bit beyond the resumes also. I feel that the sector also works on a lot of like networking, but it depends on how you build that network. Are you there in the right place at the right time when people are uh, organizing things or talking to a lot of like young individuals? So, for example, this kind of a webinar, a lot of people are asking questions. Similarly, we do a lot of webinars. People come there, they engage with the speakers. So, you have to believe it or not, people remember their names, and people who speak out, people who engage, they get they get remembered by the other person. And also there are a lot of avenues nowadays. I see a lot of like, there are some people I recognize that they will be found in every kind of a seminar or every kind of a workshop at least happening in Delhi.
एंड देर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग पुट टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ स्पेसेस जहाँ पे यंग लोग आके सेक्टर को समझ सकते हैं। बस इसी के लिए बहुत काम हो रहा है। लाइक आई एम ओनली ऑर्गेनाइजिंग दिस चेंज मेकर्स कनेक्ट। अब कल कोलकाता जाना है, कोलकाता के लोगों के लिए ये डिस्कशन करने के लिए। सो इफ एनी वन ऑफ यू आर इन कोलकाता, डू कम देयर, आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन हियर ऑल्सो। आप आ सकते हो, वहां पे भी आप और लोगों से मिलके बात कर सकते हो। तो ये स्पेसेस ये होते हैं जहाँ पे आप जितने आपके बहुत ही नाइव क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक द क्वेश्चन यू माइट थिंक कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, या फिर मुझे किसी से पूछना चाहिए कि नहीं, मैं अच्छा लगूंगा या अच्छी लगूंगी पूछते हुए, कॉन्फिडेंस वाला प्रॉब्लम होता है, वो इन स्पेसेस में ना थोड़ा सा बूस्ट होता है। यू आर एबल टू आस्क एज सिली क्वेश्चन एज पॉसिबल कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं सेक्टर में। जिन बहुत सारे लोग ये सवाल नहीं पूछते, यही सोचते हैं कि करे पूछे कि नहीं पूछे, कितने पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पैसे सभी को मिल रहे हैं, बट ऐसे ही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी सबको बहुत सारे पैसे नहीं मिल रहे, बट पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना आप ऐसे ऑफलाइन स्पेसेस में जाके भी एंगेज करके लोगों से मिलके पूछ सकते हो। जितना ज्यादा आप जाओगे उतना ज्यादा लोग आपको ध्यान भी रखेंगे कि हाँ, दिस इज समवन हु इज काइंड ऑफ वांट टू नो समथिंग अबाउट सोशल सेक्टर। मतलब ये बहुत टाइम से हमारे साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कुछ तो करने का मन है। एक वो वाला भी पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, और किसी के अंदर इतनी ऊर्जा है कुछ करने की या फिर इतनी इच्छा है कुछ करने की, आई पर्सनली बिलीव कि सेक्टर उनको चांस तो जरूर देता है। कोई ना कोई कभी ना कभी दैट हिट, दैट स्वीट स्पॉट हिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, कि हाँ हम इनके साथ काम कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आई ऑल्सो डू ट्राई टू डू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू कैन डू बियॉन्ड योर टीवी एंड टेक्स्ट, क्योंकि सब टेक्स्ट में अच्छे नहीं होते, बट सब बोलने में, किसी कोई बोलने में अच्छा है तो कोई अपने आप को एक्सप्रेस अलग तरीके से करने में अच्छा है। तो फाइंड आउट डिफरेंट वेज। डेफिनेटली संजना, आई थिंक जो आप कह रहे हैं ना, अर्ली करियर में वी कीप ऑन जस्ट अप्लाइंग एंड अप्लाइंग, बट जो एक नेटवर्क वाला है, एंड दिस नेटवर्क लाइक ऑफलाइन भी है, सिटी चैप्टर्स है, ऑनलाइन है, तो एक पर्सनल ब्रांडिंग या जो पर्सनल आइडेंटिटी वाला है वो एक बड़ा help करता है as you grow, as you apply, and then I can resonate. I got through one of the org just because LinkedIn they approached and then with chasing. So, and I hope this might be with some of you also. फरदीन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप GDI में अभी, उससे पहले बायजूस में थे, बहुत सारा अनुभव है लोगों के साथ काम करने का, क्या लगता है? जी, काफ़ी कुछ कवर कर लिया गया है और मेरे हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे शॉर्ट लिस्ट होना है। और बहुत ही स्ट्रगल फेज चल रहा है लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और पोजीशंस उतनी अवेलेबल नहीं है। तो कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि उस हिसाब से स्किलिंग भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने आप को पोजीशन करना है जब आप किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मनिंदर और संजना ने कवर किया है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो आई थिंक यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और हमने काफ़ी बार सुना भी होगा दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, और सोशल सेक्टर के लिए ये इट्स वेरी ट्रू। तो और नेटवर्किंग, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दे क्रिएटेड देयर ऑनलाइन लिंक्डइन प्रोफाइल और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया और वहाँ पर उनका काम खत्म हो गया। बट आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट engaging yourself on LinkedIn with the right connections that you are connecting with। और पोस्ट पे कमेंट करें, अपने इनसाइट शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करें। तो आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू अगर आप इस तरीके से एंगेज हो रहे हैं लिंक्डइन पे। और ऑल्सो जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए, दैट कोल्ड मैसेजिंग। एक सिंपल हाय, आई एडमायर योर वर्क एट XYZ एंड वुड लव टू लर्न, मतलब ये कैन ओपन डोर्स। So I think you'd be surprised how many people are willing to help you when you approach them with a genuine curiosity। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मैं ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप के ऊपर काफ़ी बात की गई इस चीज़ के। अगर इफ़ यू आर इन द इनिशियल फेज ऑफ योर करियर, आई थिंक वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको जॉब में लैंड करने के लिए। सो I think you should start small, but start somewhere. The more you immerse yourself, the more opportunities will naturally find you.
So yeah. सो अज्यूमिंग जब आप बोल रहे हैं इंटर्नशिप करो, ये नेटवर्क करो, ये सब हाउ डू यू शो ऑन रिज्यूमेज, ये आपका स्किल के बारे में बात करेगा कि you have hands-on experience on the skill, and then generally when employers hiring, Hershey is here, Hershey is the HR at Haq Darshak. So if you want to chat while he's here, and Vignesh is also here from Education Alliance. So if you want to chat with these people also, major is while shortlisting, no skill major देखते हैं या experience देखते हैं, and early careers में I think it's more on skill, जो आपकी एजुकेशन या फिर जो आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स जो ये कह रहे हैं बार बार कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होंगे, तो गुड गुड टू हियर फ्रॉम यू फरदीन। आयुष, फ्रॉम पॉलिसी एंगल या फिर फेलोशिप में कैसे शॉर्ट लिस्ट हों, उसके अराउंड जॉब्स एक सेपरेट हो गया, बट एक फेलोशिप एक अलग ही कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री है करियर का। कंसल्टिंग में भी जाते हैं बहुत सारे लोग फेलोशिप में, तो उसके अराउंड कैसे शॉर्ट लिस्ट हो, क्या कहना चाहेंगे? Yeah, thanks, Mahala. I think the first thing I would say, by the way, is I think I also see a lot of people who are disheartened about not getting through a lot of job opportunities. I think the first thing I would say is please don't be disheartened. I think this sector is also something which is very unstructured when it comes to hiring. HR teams are very like heavy on a lot of tasks. There are fewer people in the HR teams usually, especially with smaller NGOs and not-for-profit and other spaces. So there are times when they don't get a chance to look at your CV. There are times when they may find someone internally through referrals. So don't be like, I think a lot of problem also comes from the fact that a lot of people get disheartened after applying for a couple of jobs simply because they don't realize that there may be XXX things in the JD. Sometimes people don't even share when they're actually sharing the JD. And you may not fit the bill, someone else may fit the bill better simply because of a diploma they have done or a job experience they have. Coming to fellowships, I think that's a wonderful chance for me to also connect this to fellowships. I think fellowships, unlike a lot of other hiring opportunities in the sector, are one of the most structured and most fair places to get hired in the space because uh, they are very very transparent in हमको क्या चाहिए जब हम हायर करते हैं. They're hiring too many people at once. While a job role may have one, maximum two, sometimes three or four people being hired for the same job role. Just imagine when you are hired for a fellowship, there are 50 roles or 20 roles or 25 roles, same roles that you're being hired for. I did the LAMP fellowship where uh, they hire 50 individuals in one go when they hire them for LAMP fellowship. Similarly, I did the CMGJ program where you work with the government of Haryana on the implementation of government programs. Again, 22 people, 24 people were hired in the same go for the same role. So hence there was a lot of transparency around it. Another reason to do fellowships, and I'll also talk about how to get hired for fellowships quickly after that. Another reason to do fellowships again is they're excellent learning opportunities, and not just from the kind of work that you're doing, even the kind of peers you have. Because in some ways, the way fellowships are usually built. So I had done 2 fellowships in the sector, and I applied for a third one. My interviewer literally asked me that why a third one, and I actually went on to answer why not a third one, and they ended up hiring me, and he was very impressed. Um, but yeah, I think the reason for a third one or reason for a fourth one is not because fellowships fellowships are something that are the only thing I'm able to find, but fellowships have such wonderful learning component built into them. Whenever someone is building a fellowship, whenever any organization or individual is building a fellowship, they create a lot of learning component for you. And that learning component literally took me to classrooms. When I was doing the LAMP fellowship or when I was doing CMGJ program, every 6 weeks, I was actually taken to a classroom with all my peers and given sessions on different things. I was taught how to make presentations se leke, I was interacting with the founder of Paytm se leke, I was interacting with someone who started Incredible India in IAS from 93, 94 batch. So there were a lot of learning opportunities in the good fellowships. Now I'll also talk about how to go about choosing your fellowships. I think over the last few years, there has been a proliferation of fellowships in this space.
simply because anyone who wants to hire today, sorry for the crude language, calls it a fellowship today because बहुत सारे लोगों को हायर करना है, we want to make it look attractive, let's call it a fellowship. So you need to be able to also evaluate if it's a good fellowship. One of the ways to go about it is, of course, go for the more trusted and the fellowships that have been around. LAM Fellowship, SBI for Youth India Fellowship, Gandhi Fellowship, Teach for India Fellowship, CMGJ program, other young professionals program are some of these things that you can do, again based on what is your area of interest. For example, I was interested in politics and policy, hence I chose LAMP Fellowship. You want to work on the ground and want to actually work with communities, go ahead and choose a Gandhi Fellowship or a community SBI for Youth for India Fellowship. You want to work with the government, but on the ground, there's so many district level programs that a lot of organizations are running. GDI and Central Square Foundation are also one of them. If you want to, let's say, work at state government level, there's the Punjab CM fellowship that they have been running. I'm not sure what's the current status of it. But yeah, another way to go about these fellowships is one, definitely speak with people who have done these fellowships before. It'll give you both things. One, whether you should do this fellowship, and second, what kind of a interview, what kind of application happens. Like, for example, the fellowship that I did, I already knew ki they do prefer having some ground level experience. Uh, the so hence I went ahead and did an internship with ASA when I was still in college. So I think being able to plan ahead for any kind of role that you do, including fellowships, is I think another key. MS, would you want me to cover anything else on fellowships? Also, someone asked in the chat if you can mention few of this fellowship that you recommend while they are starting career. Okay, I mean, I have you mentioned a few. I'll put the others in chat. sure, yeah. Thank you, Yeah. Ayush. एक सवाल जो जनरली हमें भी बहुत आता है. Yes, Sanjana, please go ahead and then I'll take. Yeah. Okay. नहीं, बस एक ही चीज ऐड करनी थी बिकॉज आई ऑल्सो केम फ्रॉम अ फेलोशिप बैकग्राउंड. आई डिड इंडिया फेलोज सोशल लीडरशिप प्रोग्राम from the same reason which Ayush also identified, that I wanted to work on in real villages. I've never been to a village. I was very much a city girl. So just to check that how the villages look like and what kind of work happens there, I chose that kind of a very hands-on fellowship. Uh, how to get shortlisted was the question. How to get shortlisted in the fellowships is one thing, that only one thing, which is that you should know why you are applying. Don't fake it out, and also don't try to fake out. मतलब ऐसे cool लगने की जरूरत नहीं होती है applications में. अगर आपने बहुत छोटी सी भी चीज की है ना और आपको लगता है that makes sense, write it down very authentically. ये मेरे साथ हुआ है. मतलब I got rejected, I got accepted. वो चीजें चलती रहती हैं. It's part and parcel. It's part of life only. कि रिजेक्ट भी होंगे बट एक्सेप्ट भी होंगे जहाँ पे आपका अलाइनमेंट मैच करेगा. बहुत सारी फेलोशिप्स के अलाइनमेंट प्रोसेस भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, which we may want to delve in this conversation or may do it another one. But yeah, we have to understand each fellowship wise, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग है, सबका विजन अलग है, सबका प्रोसेस अलग है, और सबके सबके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग है. मतलब आउटकम्स भी अलग है. अगर आप टीच फॉर इंडिया में जाओगे तो आप इंडिया फेलो जैसा आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आप इंडिया फेलो में जाओगे तो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया वाला भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे. बहुत ही नीश तरीके से डिजाइन की जाती हैं सारी फेलोशिप. तो बहुत केयरफुली यू हैव टू रीड ऑल्सो दैट व्हाट यू वांट टू गो फॉर. Very relevant, Sanjana. आप जो कह रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो अगेन, अगर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं फेलोशिप का, सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क is also the kind of skill that they want to understand you bring. So जब आप, and बहुत सारे जगह पे मैंने ये भी देखा है, and we keep on doing this beta testing. अगर आप थोड़ा सा लेंदी एप्लीकेशन फॉर्म बना दोगे, लोग अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज एवरीवन वांट टू गेट थ्रू वेरी वेरी इजीली. एंड ये फेलोशिप में भी बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सिंपल है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं. और ये बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस भी जो थोड़े ट्रिकी होते हैं ना,
मुझे ऐसा लगता है ऐसे समय में आपको अप्लाई करना चाहिए थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि आपका कंपटीशन वैसे ही बहुत कम हो जाता है। पीपल डोंट टेंड टू अप्लाई। सेकंड, जॉब्स के बारे में, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज़ है, राइट टाइम पे कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी में हम फिट बैठ रहे हैं। क्या अगर वो मिड सीनियर है तो हम वैसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उस रोल में, या कई बार हमें लगता है कि 5 साल का अनुभव चाहिए उसमें और मैं 2 साल वाला भी वो कर सकता हूँ। सो कई बार आप रिजेक्ट हो जाते हो, डजेंट मीन आप नहीं कर सकते। बट संस्थाओं की क्या होते हैं ना, पे पैरिटी होती है कि इस रोल पे इतना मिनिमम एक्सपीरियंस का पर्सन ही होना चाहिए, क्योंकि वो किसी को मैनेज करेगा जो 2 साल वाले का है। तो अगर आप 2 साल में तो वो अपनी पे पैरिटी, वो जो एज और एक्सपीरियंस वाले क्राइटेरियाज हैं, एंड सम ऑफ दीज अंडरस्टैंड समटाइम वी आर गुड विद सो मैनी गुड थिंग्स बट नॉट विद एवरीथिंग। सो हमें लगता है वी कैन डू, बट सम ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कम विद एक्सपीरियंसेस। एक सवाल जो बार बार आते रहता है, एंड आई थिंक मनिंदर एंड यश, बोथ ऑफ यू कैन पिक। बहुत सारे सवाल एंड आई एम श्योर आपको भी आते होंगे कि फ्रेशर्स के लिए जॉब कहाँ से है भी नहीं है, कोई हायर करना ही नहीं चाह रहा है, या सो इफ यू वांट टू टेक अप मनिंदर, फ्रेशर्स हैं तो कहाँ से जॉब ढूंढे, कैसे ढूंढे, हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल माला। और आई थिंक जब हमने रोल आउट किया अपनी पोर्टल के लिए, सजेशन के लिए, ये सबसे पहला सजेशन हमारे पास यही आया था। और मेजोरिटी ऑफ सजेशन जो है वो यही आ रहे हैं कि फ्रेशर्स के लिए जॉब हैं नहीं हैं, या अगर हैं तो डेडिकेटेड कोई पोर्टल है ऐसा। सो आई थिंक Path Builder Foundation बहुत अच्छा, every week on every Friday they used to share a very good compilation of job list of which are available for the freshers. Second, I think there are lots of opportunity, Mala. Every day, like we used to compile this daily job roundup, you can say, uh, and in that job roundup, though we are not able to add all the details, I think one thing what freshers are missing, that they are not reading JDs at all. Wherever they see if there is an opportunity, for example, an executive kind of role, they think that it's for the experienced people. There are lots of opportunity. For example, what I have seen, that NEET Foundation on regular basis they used to hire freshers. Dr. Reddy Foundation, they used to hire freshers. Anudip Foundation, they used to hire freshers on regular basis. Ambuja Foundation, one of the I think the largest CSR foundation, which used to hire freshers on regular basis. And there is a long list of organization, and they are hiring freshers. So freshers jobs are available, and I think the term which is created in this space, I think we are not freshers at all. We have very good theoretical understanding of this sector from wherever we are coming. Like for example, जब मैंने अपना एजुकेशन किया, तो आई नो कि एजुकेशन की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी मेरी। तो आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज एन फ्रेशर, क्योंकि उस टाइम मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं। इट्स नॉट अबाउट। और कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि वो 1 से 2 साल के या 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, बट दे कंसीडर फ्रेशर्स इनटू दो जॉब रोल्स। सो आई थिंक एक तो हमेशा हमें ये नहीं देखना चाहिए जहाँ जीरो लिखा हो वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ हमें थोड़ा सा, हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। हम फ्रेशर नहीं है, हमारे पास भी स्किल्स हैं, और हमें अपने प्रोफाइल्स को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली जो है दिखाना भी पड़ेगा कि हमारे पास क्या स्किल है एज ए फ्रेशर। अगर हमें कहीं चांस भी मिलता है, अगर हमें स्क्रूटनिटी में अगर कहीं आना है, तो हमें आई थिंक वो स्किल वाला पोर्शन बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने प्रोफाइल पे दिखाना होगा कि ये स्किल्स मेरे पास भी हैं। अगर कोई 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कोई बात कर रहा है किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में, आई थिंक वहाँ पे हम बैट कर सकते हैं, बट विद द राइट स्किल्स, अगर हम वो स्किल्स अपने प्रोफाइल पे दिखा पा रहे हैं। सो इट्स नॉट एट ऑल। एंड सेकेंड, लाइक वी हैव डिसाइडेड कि हम अपने जॉब पोर्टल पे एक डेडिकेटेड जो है टैब बनाएंगे जो सिर्फ फ्रेशर्स के जॉब्स के लिए होगा। और
we will take up this thing कि freshers at least जो है वो जॉब जो है वो एक पर्टिकुलर चैनल पे देख पाएं, सारी की सारी जो भी अवेलेबल हैं, जो भी हम पैच आउट कर पाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से. So that's all from my side, Mala. I think freshers need to reconsider themselves that they are not fresher at all. They have skills, and they have to work upon on their skills instead of writing everywhere. I have seen in multiple groups also कि freshers के लिए कोई जॉब नहीं लिखता है. आप भी नहीं लिखते हो. हमें लगा था कि आप लिखोगे. कोई नहीं करता है. फ्रेशर्स को कोई सोचता ही नहीं है, भाई हमें काम नहीं दोगे तो हम एक्सपीरियंस कैसे लेंगे. I think we also started our journey as a fresher only, and it was not that hard, but it's more about you, that how you are seeing things and what strategy actually you are taking on. अगर आप बिना strategy के job hunt पे जा रहे हैं as a fresher, तो it will be more difficult. Definitely, Maninder, definitely makes sense. And जैसे इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है, जिस तरह के अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, आप कैसे स्किल के बारे में बात करते हैं ना अपने रिज्यूमे में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड आप कम्युनिटीज के साथ साथ थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, वन जो मनिंदर कह रहे हैं, वो जो जॉब शेयर कर रहे हैं उस पे भी तीर कमान लेके लोग लगे रहते हैं. आप ये नहीं कर रहे. So maybe I think we should appreciate Maninder and folks who are sharing these resources, keep on sharing, because that's a great help for the community. So it's just that how do we look through text and then find something for ourselves. Well, Maninder and Yash, Ayush, Fardeen, Sanjana doing without charging anything. So I think we should appreciate all of you as well. Ayush, Yash, you want to take up on freshers job? Absolutely. In fact, MS, I'll also just add a couple of other things which I would request for everyone to keep in mind as you go about planning a career, right? Which is, firstly, please do remember that jobs and careers are two different things. Whenever I speak with young people, this is something I try and share for sure, right? Jobs are a small part of your overall career, right? Absolutely, the whole thing around getting a first job, that's real, and I'll come to that very shortly, right? But I just want you to remember that, in public policy, social impact space in particular, a lot of the hiring is short-term, contractual, 1 year, 6 months, whatever, right? Of course, you have to get started somewhere. I'm not speaking against any kind of opportunity. All that I'm saying is that do try and also distinguish, especially as you climb up the ladder, that what kind of roles do you want to eventually take up, right? So early on, we can't be choosers, right? No one starts as being in a position to be able to choose everything. So that's okay. Then we start with anything that is decent, well-paying, and so on and so forth. But eventually, just have the framework in your mind, right? That's because what will end up happening is that at some point very soon in your life, actually, you'll be like, okay, I've hit a ceiling where I'm not supposed to be doing that, right? So that's one thing. But coming back to the question itself, right? I couldn't agree more with Maninder, right? And the only thing that I would add to that is that, it might not be the best thing to say, but if you can really make the best use of your time during college or your master's, right? It genuinely makes a huge amount of difference. Okay. And the reason for that is very specific, which is your time while you're in college or master's, like any sort of program, is not really worth anything, broadly speaking, right? In the sense that once you're out of college, university, you're expected to get a job, get a salary, and all of that, right? But while you're in college, university, no, at least the world does not expect you to do wonders, right? They just expect you to study, right? We would all agree that we can find time outside of that as well, outside of classes and those hours, right? The point being that, for example, whatever career I could build, right? I just have a BA in journalism. I could do that because while I was in college in Symbiosis, right? In the 3 years, I did, I don't know, 7, 8 internships, each in different city, function vertical, right? I was doing whatever I could get my hands on to learn, right? Virtually, part-time, this, that, right? And honestly, that has allowed me to build whatever career I have. Today, no one knows or thinks or asks, where did I study, what did I do, right? They just get that, oh, okay, he had these many internships, these many jobs, and that's enough, right? So just, basically repeating in a different manner what Maninder said, that don't think of yourself as a fresher. More importantly, make sure that you're actually not a fresher. It's not just about thinking, right? So which means that, while you're in college, university, you put those hours, right? It can be interning, it can be volunteering, it can be full-time job. And think about it this way. There's a full-time job, there's a part-time job, there's consulting, there's interning, there's volunteering. This was in decreasing order of commitment, right? In terms of time commitment. Full-time job needs the most commitment, volunteering needs the least commitment, right? Which also means this is an increasing ease of access.
Like volunteering is the easiest to access, right? You can just start with a local nonprofit anywhere, quite frankly, right? And full-time job is the most difficult to access, right? The point being that everything in this, sort of pyramid of value chain matters, right? No one will be like, oh, this is you volunteered here but did not intern. No, your experience does not count. No one really says that, right? So I hope you keep that in mind. And just one final small thing, which is, since a lot of us here also work on the other side of the equation, which is hiring, right? And I'm sure MS Maninder, all of you can probably add more on this. Sometimes, a role which is actually intended for 0 to 1 years of experience is listed as 1 to 2, right? Just as a filter. Okay. Like it's not deliberate to, just put people out, but in the sense that in the hopes of attracting better candidates, of those candidates with at least some experience, even of interning, right? So don't rule yourself out, right? If a role needs 1 or 2 years of experience, apply. It's okay. Of course, don't randomly spam places, right? But if you think that you have a chance and your experience matches what they need, just apply. It's okay. It's someone else's job to reject your profile if you're not a fit, and that's okay. So, yeah. Definitely great insight. People will now open for Q&A. There are some interesting question we have. I'll just pick up the first one, which is on the college. And this is by Pankaj Tiwari. He says, does the college from where the student is coming also impact a lot? If yes, then then up to what extent? मतलब आप किस कॉलेज से आ रहे हो, क्या वो मैटर करता है? You want to respond, Sanjana, for the Ayush? I can start. I think whatever I have seen in my experience of 9-10 years, देखो colleges तो definitely matter करते हैं, they become the filter, and the education background, uh, the education system is also kind of very selective in our country especially. Everyone want to attract the best, and when we say best, for best there are filters. बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, बच्चों के कॉलेज कौन से हैं, एंड देन वो कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो इट बिकम्स अ सेलेक्टिव kind of a system which sometimes is unfair. I can definitely say that. But it's not मतलब वेरी वेरी ब्लाइंड फोल्डेड कि मतलब बिल्कुल ही आंख बंद करके इसी को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोशल सेक्टर में भी सारे आईआईएम और आईआईटी के ही लोग काम कर रहे होते और कोई कॉलेज के बच्चे काम नहीं कर रहे होते। बट ऐसा नहीं है, लोग हर कॉलेज से काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉलेजेस से भी काम कर रहे हैं जिन कॉलेजेस को का शायद हमें नहीं नाम पता होगा, या फिर हमें नहीं, मतलब अब कोई बस्तर में कोई कॉलेज है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट बिकॉज दैट पर्सन हैज credibility, that person has skills, that person has showcased his or her impact very मतलब strongly, that becomes very important कि मतलब how you are presenting। तो थोड़ा सा जो एफर्ट जाता है वो जाता है प्रेजेंटेशन की तरफ, एंड when you are मतलब you have to also accept yourself कि if you are not good at presenting, so I'm not a person who is very bookish, and I'm not a person who is very good at writing, मतलब I don't, मतलब I can't literally beautifully showcase everything in text, but I might do it very beautifully when I'm talking, so I will seek support। मतलब अब तो आपको यहाँ तक भी सपोर्ट है कि बहुत सारे लिंक्डइन पे ही लोग हैं जो आपके सीवी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप हमें अपना सीवी भेजो, हम आपको इम्प्रूव करके भेजेंगे, आधा काम ही खत्म। देर आर पीपल जो बोलते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, समझेंगे आपको क्या क्या हाईलाइट करना है, हम उसके हिसाब से आपका सीवी बना के देंगे। तो आप उनके जैसे लोगों से हेल्प ले लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज एट द एंड हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। उसके लिए अगर हमें हेल्प लग रही है तो हम ले लेंगे, बट कॉलेजेस इतना इम्पैक्ट नहीं करते। टोटल आंसर इज दिस, ऐसा नहीं है कि हर कॉलेजेस को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, या ये बिल्कुल ही मतलब वी डोंट लाइक इट, वी लाइक इट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट ये है कि अगर आप कैसे भी कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, इफ यू हैव दैट पैशन और आपके अंदर वो जज्बा दिखाई दे रहा है, वो जज्बे को आई थिंक लोग अप्रिशिएट करते हैं और वो उनको चांस भी देते हैं। यू पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड। मतलब अगर मैं आईएसडीएम की ही बात करूं, हमारे पास इतने रूरल एरियाज से लोग अप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली ही वी गॉट अ पर्सन फ्रॉम बस्तर, मेरे दिमाग में इसलिए आया बिकॉज बस्तर से किसी ने अप्लाई किया था। वी सपोर्टेड देम विद स्कॉलरशिप ऑल्सो। उनका मतलब आई थिंक ही गॉट
full scholarship, living grant. They got everything which they need to study in ISDM. Why? Because that person showed passion. That person filled his application very diligently. उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया. इस कारण से वो अब सेलेक्ट भी हुए, स्कॉलरशिप भी मिली, फीस वेव भी हुआ, सब कुछ हुआ. So that is one example which came to me very personally because I'm into that process. So yeah, everyone can go for any kind of organization, any kind of courses. Just put your best forward. अगर आपको कुछ help की जरूरत है तो seek that help. स्पेशली फ्रॉम दोज पीपल जो उसी काम को कर रहे हैं. अगर आप मेरे को बोलोगे ना मेरा सीवी ठीक करके भेज दो, मैं नहीं भेज पाऊंगी. ना मेरे पास उस चीज का स्किल होगा, ना मेरे पास उस चीज के लिए टाइम होगा. बट डेडिकेटेड लोग हैं जो इसी काम को कर रहे हैं, तो आप उनको रीच आउट करो, उनसे आप हेल्प लो और आप आगे बढ़ो. Definitely. I have added a list of coaches with their link how to book in the chat. Thank you, Sanjana. Definitely makes sense that colleges doesn't matter much. Fardeen, Ayush, you have some take on the same question? I think Sanjana has covered it well. I'll just add a little bit to it. I would say yes and no. Colleges do matter, of course. But one, they do matter when you're just getting into your entry level job. I think this start to matter less and less as you add valuable experience on your CV. So it also depends on which vantage point you're talking from. And if you're talking from, again, as an entry level job entrant, someone who's going to join their first job, something Yash talked about, all the internships, all the other experiences that make you valuable. And I think another thing that I would like to add, which is not just necessarily an answer to this question, is a lot of people here have concerns about being freshers and getting jobs. One is to get experience, get skills, and everything else. But it's also very, very important to choose smartly where you are going to be interning, not just in terms of the kind of experience you get and the brand value you get on your resume. Maybe if you're so concerned about getting your first job and they're not enough in the market, go ahead and find those small NGOs which are about to start out, are starting out, and find volunteering opportunities and jobs, internships at those places. You're much more likely to both get valuable experience because at a smaller organization you would have more responsibility even as an intern, plus probably get a pre-placement offer. I know a lot of people who have been concerned about their skill sets, the kind of places they come from, the kind of skill sets they have, the kind of barriers they may have, whichever kind. I've always advised them to go find these jobs at these places and do that. And second, I think another concern people have is about reaching out on LinkedIn and everything else. Something as simple as that. I think Fardeen was talking about cold calling. Do cold call, but also be a little respectful when you cold call. I think a hi, how are you doesn't cut it because I'm not expecting to be able to answer hi, how are yous like 50 or 100 of them. But if you mention to me, oh, you're looking for an internship, you're just looking for a conversation, you're looking for something else, maybe I'll not be able to get on a call with you, but I would be able to respond to you, or maybe I would be able to help you. You've asked me कि मुझे environment के space में internship चाहिए. Maybe 2 or 3 of my friends are hiring, and I can ask you for your CV and send it to you. So give as much information as possible in these conversations. And another way to get these internships and these jobs and everything, something that I advised someone recently and really worked out for them. This person tells me that X जगह है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है. She had like 4-5 years of really good experience, had done the Teach for India fellowship, and she said, मुझे job नहीं मिल रहा है. I'm not even getting an interview. She went to a particular conference that was happening in Delhi, met a couple of people from that organization, explained what she was trying to explain on email and LinkedIn messages. It worked out a charm for her, and now she's working there. So I think there are multiple avenues that exist today. You just need to figure them out. But yeah, sorry for a longer answer, but I also wanted to have That's this out for helpful, people who are Ayush. concerned. Yeah. That is helpful, really helpful. Quickly looking at time, I have also tried to put up if we can extend for another 10-15 minutes. We have committed for 75 minutes, but we are just extending because these are very, very important questions.
We have another question which is from Suraj, not from Suraj, but Sahid Anjum. So Sahid Anjum पूछ रहे हैं कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से हैं या फिर फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर से नहीं है, एजुकेशन सेक्टर से नहीं है, और अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं सोशल सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में, तो कौन से स्किल रिक्वायर्ड है और कैसे ये सब होगा? मनिंदर, फरवीन, अगर आप ये पिक करना चाहें तो I'm just taking that liberty to choose you, so that yeah. Sure, Please. Mala. Fadin, if you want to go first, you can. Otherwise, Please, Mahendra, you go. या सो मैं सिर्फ माला इसके बारे में मैं ओवरऑल भी बात करूंगा, चाहे वो कॉलेज की बात है चाहे किसी भी सेक्टर की बात है। आई थिंक इट्स गेम अबाउट स्किल्स, कुछ भी नहीं है। इफ अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, यू आर एन मे बी यू आर एन मैनेजिंग सो मैनी थिंग एंड यू हैव वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल एंड दो स्किल्स आर नीडेड इन दिस सोशल सेक्टर ऑल्सो। तो इट्स अ गेम अबाउट स्किल्स कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बहुत बार लोगों को देता हूँ कि मैं एक नॉर्मल एवरेज सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, सब कुछ सरकारी कॉलेज से हुआ है। कहीं भी आज 10 साल के बाद जब मैं देखता हूँ कि नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी अबाउट माई कॉलेज, माई स्कूल, दे आर टॉकिंग अबाउट माई स्किल्स, दे आर कमिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई स्किल्स। अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, दे वांट टू सी माई स्किल ऑन माई सीवी, दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आई हैव। तो इट्स गेम ऑफ स्किल। अगर आपके पास स्किल्स हैं, देन यू कैन सर्वाइव इन दिस सेक्टर एंड यू कैन ग्रो ऑल्सो। अगर आपने कॉलेज अच्छा नहीं किया, इसके बाद डिप्लोमाज आप कीजिए, नो बडी इज आस्किंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन एट ऑल टू अप्लाई फॉर एन डिप्लोमा। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आईआईएम से कर सकते हैं। आई हैव डन 2 डिप्लोमा कोर्सेज फॉर द सीएसआर फ्रॉम आईआईएम। नो बडी इज आस्किंग मी दैट कहाँ से आपने पढ़ाई की है, भाई बता दो एटलीस्ट, तभी हम आपको लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपग्रेड करना है तो डिप्लोमाज आर देयर, यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू शोकेस बेटर थिंग ऑन योर सीवी। नाउ अगर आप कॉर्पोरेट से आते हैं, देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल आई थिंक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। दे ऑलवेज इनवाइट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कि अगर आपके पास अदर देन सोशल सेक्टर का जो वर्क एक्सपीरियंस है, यू आर वेलकम टू वर्क विद अस बिकॉज यू आर ग्रेट रिसोर्स। तो आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वेलकम करते हैं। इवन आई हैव वर्क विद एचसीएल फाउंडेशन, देयर आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल दोज हु स्विच्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू सीएसआर इटसेल्फ, या फिर सोशल सेक्टर से सीएसआर में किसी को जाना है। सब लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है, सब स्किल्स का खेल है। और आपके पास स्किल्स हैं, अगर नहीं है तो देन यू कैन स्टार्ट लाइक एज एन प्रोफेशनल। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो देन अगेन लाइक इंटर्नशिप्स एंड वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज आर फॉर यू ऑल्सो, so that you will also get to learn more about this sector, what kind of things are happening, what kind of skills are happening, and you can build your networking also, and after that you can approach to them. और एक लास्ट चीज में अप्रोच के लिए भी आई विल से, मैं क्वेश्चन में भी देख रहा था माला, किसी ने लिखा था कि लिंक्डइन पे जाते हैं क्या हम सीधा जॉब के लिए पूछ लें, और लोग करते भी ऐसा ही है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले आई थिंक वन ऑफ द एचआर शेयर्ड वेरी गुड पोस्ट कि उनको लोग रात को 12 बजे कॉल कर दे रहे हैं या 11 बजे मैसेज कर दे रहे हैं कि जॉब दे दो भाई हमें। तो आई थिंक मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद है कि मेरे पास हर रोज मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है। देयर वाज अ वन पर्सन फ्रॉम द कम्युनिकेशन, that person went through my profile और एक छोटी सी मिस्टेक उसने निकाली, and he started his message with that this is the thing which is missing in your profile, और ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए था। और इस तरीके से उसने अपनी स्किल्स बताई, और then he pointed out कि he is looking for a job, can you help me? And immediately without doing anything, I know कि that person is very keen, his skills, his observation skills are very good. So this is, I think, the right way to reach out to someone. अगर आप जा रहे हैं तो if you are showcasing your skill, then it will be easy for you to approach for anyone on LinkedIn or any other platform जाते ही। otherwise मेरे पास हर रोज सैकड़ों मैसेज आते हैं जिनमें सिर्फ ये लिख रहा था, ये मेरा नाम है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरी स्किल है, कुछ हो तो मुझे बता देना। तो ये मैसेज अगर हम लिख के छोड़ रहे हैं और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला कुछ जवाब देगा, देन आई ऑल्सो हैव एन सिमिलर काइंड ऑफ कि हम ये हैं, हम ये करते हैं, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आप ये कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दैट पर्सन नेवर रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज ऑल्सो। तो आई थिंक अगर हम राइट अप्रोच के साथ रीच आउट करेंगे, और अगर डायरेक्टली हम एचआर को ही भेज रहे हैं कि भाई मुझे जॉब दे दो, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट थिंग। बट इफ़ यू आर गोइंग विद योर स्किल्स,
then it will be easy to switch to any sector. And social sector always is welcome. I think this is the beauty of this sector कि इस सेक्टर में हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो कॉर्पोरेट से है, आईटी से है, या कहीं से भी है, क्योंकि they need people from diverse background who can actually contribute in this sector to strengthen or if they are willing to give back to the society whatever experience they have in past. Yeah, Definitely. that's all. Very thoughtful response. Fardeen, you want to add on to the question? जी मैं थोड़ी बहुत ऐड करना चाहूँगा। मनिंदर जी ने कवर कर लिया काफ़ी कुछ कि कॉर्पोरेट से अगर आप सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में इफ़ यू वांट टू मूव, तो देयर आर सो मेनी ट्रांसफरेबल स्किल्स जिसकी वजह से आप सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में यू कैन गेट अ जॉब। और अभी हम ये देख सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। दिस इज द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट सेक्टर। तो जो काम करने का नेचर है और तरीका है वो काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट जैसा होता जा रहा है। तो वो काफ़ी लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग से सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, और दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन सोशल एंटरप्राइज, और जितनी भी स्टार्टअप्स है जो सोशल इशूज़ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन जॉब अप्लाई करने का एक जो जर्नी होता है उसमें हम काफ़ी कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कि बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे मैं दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, दैट सम पीपल अप्लाई इन 50+ जॉब विदाउट ट्रैकिंग वेयर दे हैव अप्लाइड। तो एक तो ये होता है कि दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, और इससे डिमोटिवेशन तो आता ही है, साथ साथ आपके दिमाग पे एक बर्डन हो जाता है कि दैट यू हैव अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी, बी इंटेंशनल, अप्लाई फॉर रिलेवेंट रोल्स जहाँ पर आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स काम आ सकती हैं, एंड मेंटेन अ सिंपल ट्रैकर टू फॉलो अप इफेक्टिवली। अगर आप ट्रैकर एक बना के रखते हैं तो आई थिंक दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट की 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने ग्रैब की हैं वो एक सिंपल ट्रैकर बना करके वो ट्रैक किया, और जिसकी वजह से मतलब मेरे दिमाग में एटलीस्ट ये रहता था कि दैट आई हैव अप्लाइड एट दिस प्लेस। तो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी बात होती है उनसे और उनके पास इंटरव्यू कॉल आता है और वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं कि मैंने अप्लाई कहाँ किया था। तो इस तरीके से काफ़ी एचआर की तरफ से भी कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग अप्लाई करते हैं बट दे फॉरगॉट, क्योंकि वो बहुत ही मल्टीपल जगह और रैंडमली दे अप्लाई। और दूसरी एक चीज़ है, आपने लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम के जॉब पोस्टिंग्स पे देखा होगा, पीपल राइट इंटरेस्टेड इनवर्टेड कॉमा, सो इट्स लाइक इंटरेस्टेड, सो ही इज द ट्रुथ दैट दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। सो इंस्टेड आप ये एनर्जी आप कहीं और लगा सकते हैं, दैट यू रिसर्च अबाउट द रोल, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एक राइट पर्सन है उसको रीच आउट कर सकते हैं। आई थिंक वो एनर्जी यहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो दैट विल एनहेंस द चांस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्टिकुलर रोल। तो मुझे लगता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर से आ रहे हैं सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में, यू कैन ट्रांसफर दी स्किल्स, बट यू हैव द राइट माइंडसेट और इंटेंशन आपके होने चाहिए, और स्ट्रैटेजिक आपके एक्शंस होने चाहिए। तो थिंक ये चीज़ ध्यान रखने को। Well, great, very insightful. Sanjana, you want to take, say, like 15 seconds and then we move to Habib? Only Yeah. only 5 seconds. Just wanted to say two things. एक तो ये कि मतलब वी डू वेलकम पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, बट एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बिकॉज सोशल सेक्टर हैज इट्स ओन इथोस, दैट पीपल शुड बी एम्पथाइज, बिकॉज वी आर बिल्ड ऑल्सो कन्वर्टिंग इन अ वेरी कॉर्पोरेटिश model. It was not the way social sector started, and it is not intended that way. So the intentions and the kind of people, their values need to be aligned, because we are directly working with human beings. We are not working with machines. We are not working with ML AI. यहाँ पे लोग इंसान जीते जीते इंसान है जिनके लिए पॉलिसी लिखी जा रही है, जिनके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है. So understanding those nuances is very important for people who are transitioning in the sector, and that I really strongly believe, because that mindset change a lot of things on ground. उसके चक्कर में बहुत चीजें अच्छी अगर होती भी है तो बहुत बिगड़ती भी हैं, एंड दैट वो जो बिगड़ता है वो बिल्कुल कम्युनिटी पे इम्पैक्ट करता है. एक तो ये, और दूसरा ये सिंपल सी चीज है कि बिकॉज हमारे घर पे भी हमारी सबके साथ नहीं जेलअप होते हैं, हमें घर में भी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, सबके साथ कम्युनिकेशन भी बेहतर तरीके से नहीं होती है. तो इट्स बेटर टू कीप कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड डोंट गेट
into this mode कि अच्छा इसने बोला था इसने तो मेरी हेल्प नहीं की. हो सकता है मेरे को महाला के साथ बात करने में कंफर्टेबल हो रहा है, यश के साथ में बात करूं तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो, फॉर XYZ रीजन. ऐसा नहीं है मैं बात तो हम सबसे करेंगे, बट द पॉइंट इज कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. तो डोंट गेट इनटू दिस मोड ऑफ कि मतलब दो से बात की तीसरे ने तो मेरे को रिप्लाई नहीं किया. कीप डूइंग, कीप एंगेजिंग. यू डोंट नो आपकी किसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगी. दैट दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने में भी उतना ही टाइम लगता है. So understand that we experiment a lot finding right fit. So same goes with the organization, same goes with people in our network, same goes with in every situation. Great. So with this, we have the last question from Habiba. You want to unmute yourself, Habiba? Yes, I hope I am audible to everyone. Yeah. Yeah. Hello, good evening. So my question is the process of applications in job. So once we got the interview call, there will be a pre-work from the organization. And couple of experience of mine that I got like lot of lengthy questions, which will be 5, 6 questions, and it needs more time, like mostly time consuming. So like from the organization perspective or any HR from this panel, if you could help me with this, like how we can help or what perspective would you see when we were doing the pre-work? Because we don't have a 1% of chance whether we are getting this job or not, but we are giving our time or energy to learn the question. So if anyone can help with that from pre-work, how we can see this or what is the perspective on this? Thanks, Habiba. Yash, please go ahead. Thanks, MS. Thanks, Abiyo. That's a great question, right? I wonder why people don't ask this more often because, uh, especially with AI, right? Organizations are trying to add, let's just say, slightly more friction points to applications, right? So that fewer people apply, but more serious people apply, right? So, often it's like AI versus AI, AI on the hiding side and applying side. But anyway, that's a different conversation. The point being that you're spot on when you say that, hey, if I'm working towards, say, writing 2 essays, right, to apply to a particular job role, and there's a very high chance I don't get through for any reason, right? Number of people, applicants, whatever, right? Then my effort and time has gone to waste, right? Uh, so either you should be compensated, right? Or, either you get detailed feedback on your application, right? And so on and so forth. How do you best approach this so that you don't spend too much time while being able to put a good application, right? I'll tell you what I used to do. Okay. So, again, so what I mentioned earlier, that while I was in college, all the internship that I did, right, I would mostly create those internships, right, by reaching out to organizations, institutions, individuals, whatever. And when reaching out to them, right, it was not a random cold email. Like, for example, if I'm reaching out to, I don't know, an organization that works in education policy, I would make an entire deck on education policy sector in India, right? Proposed reforms, problems, what role that organization has played, right? And in the final slide, I would write about this myself that, these are my skills, my background, I would love to add value. Let me know if we can talk, right? Now, the point that I'm trying to make over here is that, I would have just 4 or 5, let's just say, documents, okay, for 4 or 5 of the largest sectors ready, right? And whenever I would be applying to a specific organization from any specific sector, I would make like 10% edits, and it would be perfectly good to go for the organization as a custom pitch, right? So anyone reading would be like, oh, wow, this was written for me. The point being that, have some blocks of knowledge and literature on your Google Docs, notes, wherever, right? That you can keep improving upon. Maybe a sample essay, sample article you've written, some sample research paper, whatever that you might have written, right? Always have that updated and saved, right? And if an application needs something far more custom, I'm sure you can, at least you won't start from scratch. You'll have something to make your base on. I hope that makes sense. Thank you. Yes. And with this, we'll take pause now. Thank you so much, everyone, for joining. I'll just take 1 minute to summarize the amazing conversation that all the 5 people, Yash, Sanjana, Fardeen, Maninder, and Ayush have mentioned. When you are heading back for dinner, and whenever you have some time next week or this week, look at platforms like LinkedIn, NCS, Jobs of Nest. Follow folks who run communities, join communities, go beyond communities, join newsletters. And Ayush also said about the skill. So look at those skill as well whenever you apply. How do you, if you're a fresher, how do you
try to put your skills in the resume and then not just share simple resume. Go for internships, like most of the people, the young leader mentioned, join webinars. This will help you understand what is happening in the ecosystem, what and how people are making decision, what and something that is emerging in the non-profit ecosystem. Some of the assumption that we have, like we are having in chat, people are sharing, and people are also sharing another perspective that will help us learn, join online, offline event as well. Uh, and just wanted to also thank you, Yash, Sanjana, Kosik, Fardeen, Maninder, and Ayush. Thank you for taking out time. Definitely, whatever the situation our community is, your insight, your thoughts will definitely help people learn, people grow, and will also help them while they're exploring the next stint. These insights might be a day-to-day conversation for you, but as understand that there are so much learning that is happening with the community. Uh, Wanted to also thank all the people who joined, taking out time to learn, also hear the fellow young leaders. And I think while the ecosystem is growing, how do we, as a young people who are on the another side, who are building communities or who are part of the community, how do we come together, share thoughts, actions, perspective will definitely help. Uh, and then as an audience, while you're listening, some of the conversation that we're having in chat is also helping us understand the perspective at other end as well. On resources, I think if you have taken notes on the link, etc. If not, no worry. We'll be sending you a dedicated email in 1 or 2 days with the resources. Yash is from Public Policy India. They host a newsletter. They have resources on fellowship and public policy articles, how to get through. Do check out them. Sanjana is from ISTM. They host public, PGDMA courses for development management. So if you are mid-senior, do check out them. Fardeen also running this community on Op Avenue. Do check out, follow them on LinkedIn. Maninder is one of the amazing folk that I keep on talking to people. He is going above and beyond, is launching a job board, sign up early and share feedback. Because I think as Ground Zero also, we keep on talking that even if there are hundreds young leader, together we are a strength. So how do we don't assume that you are applying to Ground Zero or going on Ground Zero job board, but as much as spaces that you can explore, go beyond, and so that we become larger than LinkedIn. So together, be it public policy, be it public policy square, which Ayush is part of. So Ayush is part of public policy square. Do check out these spaces. We'll be sharing detailed resource with you in the next 2 days. Some of you, those who have taken notes, if you really liked the conversation, all these 5 folks are on the LinkedIn. Feel free to post about these perspective, post about them, appreciate them. Taking out time in today's era is very difficult, trust me. And these are also free webinars. So if you have any appreciation for any of these 5 folks, go ahead, post on LinkedIn. And we would be coming up with follow-up events. Some of us will be taking turn, and then we'll be coming with more such conversations. So yeah, thank you everyone. Thank you Ayush, Singal, Maninder, Fardeen, Sanjana, and yes. Yeah, thank you everyone. Thank you. Thanks, Mahala, for all Thank you you, saying. Mala. Thank you, everyone. All right, people, good night. Thank you. Have dinner, have your chai, coffee.